ओके, सो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए फर्स्ट वी आर सिलेक्टिंग द डेटा, बिकॉज यहाँ पे पूरा एक साथ हम लोग को ये डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो आफ्टर सिलेक्टिंग द एरिया देन वी आर राइटिंग इक्वल टू राइट द फॉर्मूला. तो अभी हम लोग का डेटा जो है सी कॉलम पे है और 7th रो पे है. सो that we have to keep it in mind that all the data is written on C column only and on 7th row only. Okay, so whatever formula we are going to write doesn't matter, that formula should be fixed to the C column, should be fixed to the 7th row. So over here we want to create a cross table. So for cross table formula we are going to write the formula C8 into this D7, C8 into D7. अब C8 में ये जो डेटा आपका लिखा हुआ है C8 में 2 है, लेकिन C9 में 4 है, C10 में 6 है. तो हम लोग चाहते हैं कि ये पूरा कैलकुलेशन में आए, तो अप टू ये 12 तक, क्योंकि सिलेक्शन एरिया ये 12 तक ही है, तो ये पूरा कैलकुलेशन में आए. तो इसलिए 8 को फिक्स नहीं करना है. 8, 9 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, 11 होना चाहिए, 12 होना चाहिए, 13 होना चाहिए. लेकिन सी कॉलम जो है अगर बाय डिफ़ॉल्ट रिलेटिव रेफरेंस रह गया तो सी कॉलम विल यहाँ पे जब यहाँ पे जाएगा ई कॉलम में, सी कॉलम विल बिकम डी, बिकॉज डी कॉलम में बैठ के हम लोग सी कॉलम को रेफर कर रहे हैं, बगल वाला कॉलम को रेफर कर रहे हैं. तो जब हम लोग ये वाला कॉलम में जाएंगे, ई कॉलम में जाएंगे, इट विल रेफर द बगल वाला कॉलम, दैट मीन्स दिस डी कॉलम. तो सी विल बिकम डी and this D will become E automatically. तो ये D E होने से हम लोग को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये C अगर D हो गया तो क्या है, हम लोग का D में तो नंबर लिखा नहीं है, हम लोग का लिखा जो नंबर है दैट इज़ ऑन द C कॉलम. सो वी वांट टू गेट फिक्स्ड इनटू दिस C कॉलम. तो इसलिए C के आगे हम लोग को डॉलर देना है, सी के आगे डॉलर देना है, सो दैट ये सी कॉलम शुड नॉट गेट चेंज. ये 8, 9 हो जाए, 10 हो जाए, 11 हो जाए, डजेंट मैटर, लेकिन सी कॉलम को ही रेफर करना चाहिए. वेयर एज इन द सेकेंड पार्ट, वहाँ जहाँ पे D7 है, यहाँ पे अगर हम लोग ये साइड में जाए, ये हो जाएगा E7, F7, G7, H7. तो हम लोग को बोलने के प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 7th कॉलम में तो हम लोग का पूरा डेटा लिखा हुआ है. लेकिन ये 7 अगर 8 हो जाए तो 8 कॉलम में तो हम लोग का डेटा नहीं है जिसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई करना चाहते हैं. जो मल्टीप्लाई करना चाहते हैं वो तो 7th कॉलम में है. ठीक है, तो ये 7th कॉलम चेंज ना 7th रो चेंज नहीं होना चाहिए. तो हम नीचे ड्रैग करें तब भी ये 7th रो को ही टारगेट करना चाहिए. सो दैट इज़ वाई दिस टाइम वी आर फिक्सिंग दिस 7th रो. सो वी आर पुटिंग डॉलर इन फ्रंट ऑफ 7. तो पहले वाले में हम लोग सी कॉलम को फिक्स कर रहे हैं, दूसरे वाले में हम लोग 7th रो को फिक्स कर रहे हैं. दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग. देन आफ्टर दैट एज वी हैव सिलेक्टेड द एरिया, इंस्टेड ऑफ एंटर हम लोग प्रेस कर रहे हैं कंट्रोल एंटर. तो ये पूरा जो सिलेक्टेड एरिया है उसमें ये कवर कर देगा रिजल्ट. तो ये फार्मूला आप यहाँ पे जाकर देख सकते हो. अभी देखिए ये सी के आगे डॉलर है, इसलिए सी कॉलम को ये रेफर कर रहा है. दिस हैज़ बिकम 13 बिकॉज ये नीचे ड्रैग किया गया है, इसलिए 13 हो गया. और ये 7th रो को रेफर कर रहा है, क्योंकि 7 के आगे डॉलर है, इसलिए 7th रो को रेफर कर रहा है. दिस हैज़ बिकम एज बिकॉज ये एज कॉलम में आके ये रुका है लास्ट वाला, तो एज हो गया. तो डजेंट मैटर, ये चेंज होना चाहिए. ये आपका यहाँ पे H है, यहाँ पे G है, यहाँ पे F है, यहाँ पे E है, तो वो तो हम लोग चाहते हैं कि वो चेंज हो. लेकिन सब में ही आप देखिएगा 7th रो को ये रेफ़र कर रहा है, क्योंकि 7th रो के आगे हम लोग ने डॉलर डाला है. और सिमिलरली अगर आप C को रेफ़र करें, देखिए C कॉलम में आप कहीं भी जाए, ये C कॉलम में ही है, पहला वाला जो C कॉलम को ही रेफ़र कर रहा है. रो नंबर कुछ भी हो, डजेंट मैटर, ये C कॉलम को ही रेफ़र कर रहा है. So this is how mixed reference works. Is it clear now, everyone?
सो यहाँ पे जो फाइल है, सो इट कंटेंट्स सर्टेन टेक्स्ट फॉर्मूला. सो टेक्स्ट फॉर्मूला में क्या है, बेसिकली as I told you on the last session that we have two parts in our formula. One part is the dedicated formula, and another another one is the function. So which one is function? Whenever we are using any terms in our formula, we are using it for a specific purpose. So when we are using sum, that means we are looking for addition. When we are using count, that means we are looking for the total number of counts. Okay, so each and every terms we use in our formula, those has a specific purpose. So that is why it's called function. So in English also we say function means this particular object has a function, particular function. So how it works, so something like that. So in formula also, when we are using VLOOKUP, that means we are doing the vertical lookup in a big table. Okay, and that will help us to search the related data. So each and every formula, each and every function you are in Excel, that has a specific purpose. So that's why it's called function. So all terms we are using in formula are called functions. Okay, so that's why when you go to the formulas area, over here you have this option called insert function. So when you are clicking on insert function, you can see most recently used, and if you click on all, you'll be able to see all the functions you have in Excel. These are all premeditated function which has been written by Microsoft only. We are just using this for our own purpose in our data. Okay, so these are premeditated function, and whenever we are using the cell reference, the reference which we had done, so whenever we are using this cell reference directly instead of using any terms, those are dedicated formula. Now function can be different type also. So over here you can see the function has been divided into multiple type. Some functions are called financial function, data and time function, maths and trigonometry function, statistical function, lookup function, database function, text function, logical function. So there are multiple type of function. Nowadays you have this AI function also, copilot function also. So there are multiple type of function we have in Excel. Okay, now we are starting with the most commonly used, that is text function. So text function, logical function, and lookup function, these are the most used function in Excel. So we are going to cover the text function first. So in text function, whenever we are talking about any text function, we talk about two kind of scenario we face in Excel. One scenario is that you are copying some data from somewhere else, maybe from a PDF file or from web, or you are writing some data. You have written all the data in one column. So when you are copying some data from somewhere else, it happens that you are even if you are working in any accounting package, as you people are aware of that. So when you dump the data in Excel, most of the time, most of the accounting package works like this, that it will dump the entire data in one column. Now you have to segregate the data into different columns. So that is one scenario we face on regular basis, that where we need to segregate our entire data into different column. We have the data in one column. Okay, so that is one scenario, and another scenario could be the opposite. You have the data in two column and you want that in one column. So first one, you are joining the data from different column into one, and for the second one you are splitting the data into from one data to multiple column, one column to multiple column. So this is how this is the two scenario we normally face when we are talking about the text function. So the first one, the first scenario where we have data into two columns. So I have taken a simple example that in the first column we have employee first name written, and the second column we have employee last name written.
now we want the full name over here. So what if ये अगर नंबर होता, ये इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट ये अगर नंबर होता तो हम लोग क्या करते? तो वी write like this, we should have write like this particular cell, that means A6 and plus B6. Okay, so A6 plus B6, that is what we would have been written. Now the problem is, as this is not number, it is giving us the value error. So instead of this plus operator, what we are going to use, we are going to use this AND operator. So instead of plus operator, we are going to use AND operator. So when we are using AND operator, you can see it is joining both of the data from different column. Now we can double click and we have our data. But there is a problem. There is a problem. What is the problem? The problem is there is no space in between. So how to give the space? As I told you, according to the golden rule of Excel, what you need to do, you need to give space within double quote. Okay, so you cannot give space like this. चलो यहाँ पे space देते हैं तो यहाँ पे ऐसा करके space दे दिया. We cannot do that. So that space is not going to work. So you have to give space within double quotes. So and this double quote, whenever you are using this double quote, so you may write any text inside of that double quote. You may opt for only giving the space, doesn't matter, but you have to treat that space or the double quote as another text. Okay, so now when we are writing this double quote, so we are giving a space over here and we are closing this double quote. That is what we have learned, that we have to give space like this. Now when we are pressing enter, it is giving us error again. Why is that? Anyone? Why is this error? Why we are getting error? क्यों error आ रहा है? Anyone please? Error কেন আসছে? Why are we getting this error? So we have taken the first name A6, then we have put and then we have added this space, then we have written the last name. So where is the problem? Problem कहाँ पे है? No one? Okay. So the problem is, as I told you, that when we are taking the first name, then we are giving this space. So this space we are giving within the double quote. And whenever we are using double quote, we have to treat that particular data as another text. So you cannot ignore that. As we are giving the space, we are not writing in between. We are not writing anything else over here. So in that case, you cannot ignore that. चलो ये तो खाली space है. So it's not that. Whenever you are giving double quote, you have to treat that like another text, to treat like a middle name. So now when we are using the first name, then we are adding that first name with the middle name or the space with this and. We have to do the same for the second name also. That means the last name also. So we have to give another and over here, so that it should join the first name along with the space in between. So first name and space and second name. That is how it's going to work. So now you are going to have the space in between. Now you can double click and you'll see all the data is having the space in between. Is it clear now?
please be responsive, at least tell me yes or no, whatever. Yes, sir. So कोई कुछ नहीं बोलेगा तो समझ कैसे आएगा कि समझ में आ रहा है नहीं. Okay. Now this is something which we have taken for making you understand that how AND operator works. But normally when we have the practical scenario like this, if you scroll down below, you will see another example. So where employee name is there, employee first name is there, employee middle name is there, employee last name is there, and leave days also there. So now over here I want to write like this, that Ratul Kumar Banerjee has taken 2 days leave. So I'll write for the first one and automatically it will be written for everyone. Okay, so I'll write this for the first one and then we'll drag it so that it will be written for everyone. So now what we can do, we can use the AND operator of course, but you for just adding the first name and last name over here we have used AND twice. We have to use AND twice, so you can understand how many ANDs we are going to use if we try to write this with the help of AND. And specifically AND operator specifically use for a different purpose altogether. Normally whenever we are adding two formula results, suppose we are adding one sum from one zone, we are adding the A column sum, A column data into by writing a sum formula, and again we are taking the C column data and we are adding that data with the A column data also. So in those cases we can do what we can do, we can write the sum formula for the A column, then put AND in between, then again we can write the sum formula for C column, so that the result will be added accordingly. So or it will be shown in a concatenate way. So it can be a different purpose altogether. I'll show you the use of AND operator along with the formula. But normally for adding the normal text, we do not use AND operator. Instead of that, we always use the formula called concatenate. Okay, so either concat or concatenate. So concatenate formula we can use. I'm showing that there is a new formula also in Office 365, but I'm showing you the old one because irrespective of any version of Excel, this function is going to work. So first we write concatenate. So how to write a function? This is the first time we are going to write any function, so that is why I'm telling this. So when we are writing concatenate, so we are going to write like this. Now as we are looking to write concatenate, we will be using down arrow to select the function name. Then after doing that, we are going to press tab. So instead of writing the whole formula, we are going to use tab. So when we are using VLOOKUP, we are writing VL, then tab. HLOOKUP, HL, tab. XLOOKUP, XL, tab. So this is how we should write the formula. So now the formula name is there, and the first bracket, this is called first parenthesis or first bracket. So first bracket is there and formula name is there. So now you can see along with this there is another thing which is showing the formula name again and showing some text 1, text 2, so something like that. So it is showing below the formula. This is called syntax. We call this syntax. Each and every function you have in Excel has syntax, because as I told you, functions are premeditated. It's already been written, it's already been programmed. So that is why Microsoft is telling you how to write this formula, what are the syntax you have to follow. So this is the syntax, and in the syntax you can see within the bracket something is written, text 1 comma text 2 comma dot dot dot, then bracket is closed. So whatever you are seeing inside the bracket, it could be only one text 1, then bracket close. It could be without anything, just bracket open, bracket close. It could be a long comma 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 multiple things is written within the bracket. So whatever is written within the bracket in the syntax is called arguments or parameters.
So arguments or parameters. So arguments, parameters are written normally by স্যার putting স্ক্রিন comma in আটকে between. গেছে, কিছু দেখতে পাচ্ছি না। হ্যাঁ, স্ক্রিনটা আটকে গেছে, কিছু দেখতে পাচ্ছি না, আর আপনার কথাও মাঝে মাঝে কেটে যাচ্ছে। আচ্ছা, আমি আরেকবার ইয়ে করছি। অডিও দিতে পারছে কিন্তু স্ক্রিন কর। দেখছি আমি এক second। আচ্ছা, এবারে দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে এবারে। হ্যাঁ স্যার দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ স্যার দেখা হ্যাঁ, আর কথা শোনা যাচ্ছে পরিষ্কার? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। Okay. हाँ सर। Okay. So now what I was telling that हाँ, तो ये फॉर्मूला जब हम लोग लिखते हैं तो you will always see the syntax below written. Each and every formula you take any formula, you will see this syntax. So in the syntax, whatever is written inside the bracket के अंदर जो भी लिखा हुआ है, that is called the argument or parameters. So parameters normally written by comma in between. सो मल्टीपल पैरामीटर भी रह सकता है, एक दो पैरामीटर भी रह सकता है, कोई पैरामीटर नहीं भी रह सकता है. लाइक वी हैव वन फॉर्मूला कॉल्ड नाउ. तो नाउ फॉर्मूला जो है आपका डेट एंड टाइम फॉर्मूला है, तो उसमें कोई पैरामीटर नहीं है. नाउ ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, सो देयर इज नो पैरामीटर इन बिटवीन. सो it could be like that also. It could have one parameter also, it could have multiple parameters also. So whatever it is, those are called parameters. Now parameters, in parameters you can see ये पहला वाला जो है ये बोल्ड दिखा रहा है, तो जब भी आप पहला वाला लिख दोगे, आप कॉमा पुट करोगे तो सेकंड वाला बोल्ड हो जाएगा. मतलब जो एक्टिव पैरामीटर है दैट इज ऑलवेज बोल्ड. And the last thing which you should know that in parameters you can see this text1 is fine, but text2 is showing on the square bracket, in the square bracket. So कोई भी पैरामीटर आप जब देखोगे स्क्वायर ब्रैकेट, ये याद रखना, कोई भी पैरामीटर इफ यू सी इन स्क्वायर ब्रैकेट, दैट मीन्स दैट पैरामीटर इज ऑप्शनल. अगर वो पैरामीटर आप देते हो तब भी आपका फंक्शन इज गोइंग टू वर्क. अगर आप पैरामीटर नहीं भी देते हो वो पैरामीटर, तब भी आपका फंक्शन इज गोइंग टू वर्क. लाइक इफ आई दिस फर्स्ट वन इज मैंडेटरी, सी देयर इज नो स्क्वायर ब्रैकेट इन इट. तो मैं अगर कोई भी एक टेक्स्ट सिलेक्ट करता हूँ, देन मैं ये ब्रैकेट बंद कर देता हूँ, मैं सेकेंड वाला पैरामीटर नहीं देता हूँ, फिर भी ये कॉन्कैटिनेट काम करेगा. ठीक है, फिर भी ये फंक्शन काम करेगा. अगर मैं फर्स्ट पैरामीटर भी नहीं देता हूँ तब ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये आपका फर्स्ट पैरामीटर जो है वो मैंडेटरी है, तब ये काम नहीं करेगा. तो फ्रॉम सेकेंड वन इज इट्स ऑप्शनल बिकॉज दैट इज इन स्क्वायर ब्रैकेट. सो जब भी आप कोई पैरामीटर देखोगे स्क्वायर ब्रैकेट में है, दैट मीन्स दैट पार्ट इज ऑप्शनल. एंड द लास्ट वन ये फॉर्मूला में जो आप कॉन्कैटिनेट में जो देख रहे हो कि text1 text2 करके डॉट 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 दिया हुआ है. डॉट 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 मतलब कितना पैरामीटर है इसमें, कितना पैरामीटर दे सकते हैं. तो वो देखने के लिए आप इसका हेल्प में जा सकते हो, ये फंक्शन का हेल्प में जा सकते हो. कैसे जाना है? कोई भी फंक्शन का हेल्प में जाने के लिए आपको ऑनलाइन रहना पड़ेगा. एंड व्हेन यू आर राइटिंग द फंक्शन, देन यू कैन क्लिक ऑन द सिंटैक्स फंक्शन नेम. सिंटैक्स में जो फंक्शन नेम लिखा हुआ है उसमें आप क्लिक करो. जब आप क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली उसका हेल्प सेक्शन ओपन हो जाएगा, जो आपका पूरा उसका डिटेल्स दे देगा कि कौन सा फंक्शन है, किस तरह ये काम करता है, उसका एग्जाम्पल क्या क्या है, जो पैरामीटर्स है वो क्या एक्सप्लेन करता है. ठीक है, पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा. तो यहाँ पे देखिए, आप अगर ये सिंटैक्स में जाते हो, पैरामीटर में जाते हो, देखिए फर्स्ट वन इज रिक्वायर्ड, दैट मीन्स इज मैंडेटरी टू गिव, बट सेकेंड वन इज ऑप्शनल, इट्स लिखा हुआ है. एंड यू कैन गिव अप टू 255 आइटम्स. मतलब कितना पैरामीटर दे सकते हैं, text1 text2 text3 करके अप टू text 255 तक दे सकते हैं. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे हम लोग ज़्यादा नहीं यूज़ करने वाले हैं, 1 2 3 4 5 ऐसा करके यूज़ करने वाले हैं. तो नाउ फर्स्ट विल टेक दिस वन
ये वाला लेंगे टेक्स्ट 1। अब टेक्स्ट 2 कौन सा रहेगा? टेक्स्ट 2 क्या होगा? बोलिए, आप लोग बोलिए, टेक्स्ट 2 क्या होगा? D92 मिडिल नेम, मिडिल नेम होगा तो यस सर। नहीं होगा, क्योंकि टेक्स्ट 1 जो है फर्स्ट नेम है, टेक्स्ट 2 मिडिल नेम है, तो जो मिडिल नेम है उसके बीच में स्पेस होना चाहिए, नहीं तो वो सेम प्रॉब्लम हम लोग फेस करेंगे। तो इसलिए Yes, sir. टेक्स्ट 2 क्या होगा? स्पेस होगा। सो Double inverted. डबल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा विद स्पेस, देन ये हो गया टेक्स्ट 2। अब टेक्स्ट 3 क्या होगा? मिडिल नेम, सॉरी मिडिल नेम, ये मिडिल नेम आ गया। देन टेक्स्ट 4 अगेन वी हैव टू यूज डबल कोट, क्योंकि टेक्स्ट 4 मतलब मिडिल नेम और लास्ट नेम के बीच में भी तो सेम चीज़ होना चाहिए। तो ये आ गया आपका लास्ट नेम। तो अगर मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ, यहाँ पे मेरा फुल नेम आ गया। देखिए आप यहाँ पे आप डबल क्लिक करोगे, सबका फुल नेम आ गया, सबका फुल नेम आ गया। नाउ यहाँ पे सॉरी, नाउ यहाँ पे हम लोग तो सिर्फ ये फुल नेम लिखना चाहते हैं, ये नहीं है, हम लोग लिखना चाहते हैं कि रातुल कुमार बैनर्जी हैज़ टेकन 2 days लीव। सो ये हैज़ टेकन कहाँ से लिखेंगे? और 2 तो यहाँ पे मिल जाएगा, 2 नेक्स्ट वाले के लिए ये 4 होगा, उसके बाद वाले के लिए ये 6 होगा, तो वो तो यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन डेज लीव भी लिखना है। तो ये जो मैंने बोला कि ये डबल कोट में जब हम लोग स्पेस जैसे दे रहे हैं, डबल कोट के अंदर हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। सो दैट इज़ वाई वी आर गोइंग टू गिव कॉमा, देन विद इन डबल कोट वी आर गोइंग टू गिव स्पेस, पहले स्पेस देंगे, देन लिखेंगे हैज़ टेकन, देन अगेन स्पेस देंगे, देन ये कंप्लीट करेंगे। ओके, तो हैज़ टेकन के आगे भी स्पेस दिया, बाद में भी स्पेस दिया, क्योंकि लास्ट नेम के बाद जो हैज़ टेकन लिखा रहेगा तो उसके पहले भी स्पेस होना चाहिए और एंड में भी स्पेस होना चाहिए। तो इसलिए पहले स्पेस देंगे, देन हैज़ टेकन लिखेंगे, देन अगेन स्पेस देंगे, डबल कोट क्लोज करेंगे, हैज़ टेकन। नाउ 2 विल सिलेक्ट इट फ्रॉम हियर टू, नाउ अगेन डेज लीव। सो डेज लीव हम लोग सिमिलर वे से लिखेंगे, लेकिन स्टार्ट करेंगे विद स्पेस। तो पहले स्पेस देंगे, देन लिखेंगे डेज लीव, देन फुल स्टॉप, देन विल क्लोज द डबल कोट। ये हो गया पूरा रातुल कुमार बैनर्जी हैज़ टेकन 2 days लीव। नाउ ये क्लोज करेंगे ब्रैकेट, एंटर। नाउ यहाँ पे जाके मैं अगर डबल क्लिक करता हूँ, सबके लिए आपका सेम लिखा हो जाएगा, जो जितना दिन लीव लिया है उस हिसाब से। समझ में आया? रिपीट करना है।